I'm Dr. Tanmoy Roy Chaudhary, and I'll be taking the second uh, part of your proficiency module. Yesterday, there was the introduction to proficiency module by Dr. Deepankar Ghosh, and probably he started the data to information journey. What is data? What is information? The types of data that you have, and finally, I think he then switched over to errors. What is the importance of errors and all the significant figures, significant digits? Why do you need to calculate significant digits and all? So today, what we are going to do is we are going to find out the importance of graphs in in every field of science and engineering. See, it's not about these proficiency modules are not about a particular department. It's for engineering students as a whole. This is a lifelong learning process, and I think you should apply this, you should learn this, should not memorize this. What we are trying to tell you throughout these proficiency module classes, never memorize things. Try to understand them logically and try to implement them in real life. So it's about learning new things. So today we are going to deal with graphs. So first, let us understand the motivation behind drawing graphs. Why do we want to draw graphs? Just a second. Yes. So let me share my screen. I just a second. Just a second, students. Give me some time. There is technical glitch out there.
sir. Okay, students, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. No, sir. Please check the connection. The others can see the screen. Okay, so we will start with graphs. Now, first, we will try to have a motivation of why draw graphs, right? Say, for example, yesterday you started with data to information. You have a data set. Let us say you have some x and some y. Let's say x is 0, y is 0. X is 1. Let us say y is 25.1. If x is 2, let's say y is 51.5. If x is 3, let's say this is 76. If x is 4, let's say this is 100.8, right? So if you draw, see, this is a data. This is a raw data that you have with you, correct? Now, is this data, if you want to present this to somebody, is presenting this raw data in tabular format, is it a good practice, students? Do you think this should be presented to someone? Can anybody make out anything with this data? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. What is the best way? What is the best way to present this data? What do you Sir, think in a is the best? pictorial format, like graphs. Yes, yes. So the first motivation, why do we need to draw graphs? The question is, why graphs? Why graphs? Why a graph? So the first answer to that question is, raw data in tabular format isn't pleasing to the eyes, and people don't, or people sit, the person sitting in front of you cannot make anything out of this raw data. But if you plot this data for some x and some y, you could see a point over here. Then let us say if x is 1, this is 2, this is 3, and this is 4, and this is, let us say, 25, this is 50, this is 75, and this is 100. Then if you plot the data, you would get something like this. Something like this, you would get a data like this. So now if you present this data or this graph in front of your boss or your colleagues or your peers, whatever it is, then at least drawing this graph or presenting this graph in front of the person in front of you can make something out of this graph. And can you tell me what can you make out of the graph? What can you people make out of this graph? It's a linear graph. So it's a linear graph. So the person sitting in front of you can immediately tell you that, okay, if I increase my x, my y is going to linearly increase. This is what the person sitting in front of you can immediately recognize from the graph. So such a pictorial representation of the data is very much required, because raw data in tabular format, nobody can make out anything from the raw data. So if you want to present it, the aesthetics of it, if you want to present it, or if it, in a presentable manner in front, so that people can make out or people can draw inferences from the raw data. So the first motivation is, if you want to draw inference from a data, you have to present it in a pictorial format. So the first motivation is if you want to draw inferences. So drawing, why is the first answer is if you want to draw inferences. Correct? Am I clear? And students, if you don't get anything,
please stop me and ask me questions, but please make this clear, because this would be a lifelong learning. Whatever you're learning in proficiency module, it is applicable to any branch of engineering. Please understand this. So if you are not getting any point, please stop me and ask questions. So Repeat it, sir. so the first point is, the first why, the first answer to this why is, you can draw inferences from this. Let us say this was your data, the raw data, but you shouldn't present this raw data to anybody. But if you draw or plot a graph, then this is a more or less, this is a straight line that you can see. This is a straight line that you can see, right? So the moment you present this graph, I'll stop first of all, just a second. Maybe there is a yellow window. I'll share my screen again. Yeah. But instead of presenting this raw data to somebody, if you plot it in the form of a graph, and if you show this graph, then the person sitting in front of you can immediately recognize a pattern in the data. So that is drawing inferences from the data. Data mein kuch pattern ho sakta hai. So the moment you present that data, let us say you present something, you present a data in a graphical format. Let us say again this is y and this is x. And if your graph looks like this, what does it mean, students? When x is increasing, y is decreasing. The Both are equally increasing. No, both are not equally increasing. You can see. When the x is increasing, the y. So when the x is increasing, the y is increasing to a certain point, and it reaches the maximum point, and then it starts to decrease. Okay. Yes. Sir, this is a parabola. This is a parabolic curve. Mathematically, this is a parabolic curve. But this kind of a curve is first telling you that if you increase x a bit, right? If you increase x at the beginning, y is going to increase. And at a certain point of time, y reaches maximum. And then after that, if you increase x, right, y is going to decrease. Let me give you an example, a real life example of this graph. Let us say your x in this case is the number of laborers in a factory. Number of laborers working in a factory per day. And y is the profit per annum of the company. So you can see this. Let us say if you increase the number of laborers working, the profit of the company first increases. But when the number of laborers working reaches this value, this optimum value, now if you increase the number of laborers, then the profit of the company decreases, because you have to pay more if you increase the number of laborers. So the profit would decrease. So there is an optimum value of x, the number of laborers, for which you get. So if you present this data to let's say the CEO of a company, the CEO or the managing directors, the board will immediately notice this pattern in the data, that okay, if my number of laborers is this much, then my profit is maximum. And if I increase the number of laborers, or if I decrease the number of laborers, then my profit is also going to decrease. So please keep the number of laborers to this much. So isn't it drawing inferences, students, from the graph? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the first motivation for drawing graphs is that why draw graphs? Because it is a pictorial representation. और कभी भी आप किसी को अगर एक पिक्चर दिखाएंगे या पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना उतना ही आसान हो जाता है, because pictures speak a lot. So graphs, instead of showing this data, if you show this graph, it speaks a lot more about the real world happenings, कि असली में हो क्या रहा है. तो inferences draw करने के लिए it is always better to plot graphs. So this is the first motivation. The second motivation, students, is a bit more technical. So let us understand this very, very carefully. This is a bit more technical. Let me rub this
and let me start it. So the next one is the second one, which I like to, the second reason, the motivation is prediction. And this is important. Prediction. If you want to predict something which you do not know beforehand, but you want to predict something, then graphs are very, very useful. Then graphs are very, very useful. Let me give you some examples of it. Let us say you have again a set of data points. Let us say you again have a set of data points. Let us say X and Y. So X is 0, Y is 0. Let us say X is 1, Y is, let us say, some 25.1. When X is 2, Y is 50.6. Just giving random examples. 75.1, 4, let us say it is 100.4, something like that. You have this real life data. Through experiment, आप लोगों के पास ये data है. What you want to do is you plot a graph. You plot a graph between X and Y. And I'll tell you कि X क्या होना चाहिए और Y क्या होना चाहिए in due time. Please, that will be very, very important. So X and Y आप लोगों ने plot किया. So this is 0, 0, something like this. So you get a graph like this. So ऐसा कुछ graph आप लोगों को मिल जाता है. And you draw a straight line. You see that this is a graph. This is a linear variation between X and Y, and you draw a graph. But please, students, please understand, you have this much amount of data. X और Y का आपके पास ये data है. If you want to know what is the value of Y for a given X, unknown X. So let us say I want to know what is the value of Y. So you can clearly see that Y is basically a function of X. Isn't it? Am I right, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And in this case, this function is a linear function. So I can write the function as Y is equals to mx plus c. You know the linear equation of a line. So this is a linear function. So this is nothing but fx. So if I want to know, and you have drawn this line, passing through the points. आपके पास ये experimental points है जिसको मैं circle कर रहा हूँ. ये points कौन से points हैं? These points are basically these points. ये वाले points हैं आपके experimental points. And from the experimental points, you draw a graph. आज हम यही सीखने वाले हैं कि graph को कैसे draw करना है. ये line कैसे draw करें? How should you draw the line? Technically हम लोग सीखेंगे कि line को कैसे draw करते हैं. So let us say you know how to draw the line and you have drawn the line. यानी आपने graph बना लिया है. So for simplicity, let us consider आप लोगों ने सीख लिया है and you know how to draw the graph and you have drawn the graph. That is, if you have drawn the line. I want to know what is the value of Y when the value of X is, let us say, 156. आप लोगों का experimental data में please see, oh sorry, I'm really sorry, just a second, not 156. This is going to be really absurd. Okay, let me say this is 10. What is the value of Y when the value of X is 10? So from here you can see that approximately what should be the slope of the line. M का value क्या होना चाहिए, students? 25. 45. 45 क्यों? Look at this data. 25. 25. 25 के आसपास. 25.1. So what? नहीं, line का क्या होना चाहिए? Okay, we are still not there. So let us say approximately, मान लीजिए आप लोगों ने जो line draw किया है, इस line का equation M is 25. Let us say
Example, just an example. You find out that M is 25. So what is the equation? Your equation is, and C is 0. C is 0. Let us say you find this out. So Y का equation क्या बन जाता है? 25x plus 0. Or whatever it is, Y is equals to 25x. So this is what you know. Am I right, students? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. अब देखो मोटिवेशन देखो, तुम लोगों को निकालना है what is the value of y if the value of x is 10. भाई आप लोगों के पास डेटा में x 10 है ही नहीं, आप लोगों ने लिया ही नहीं है, ये है ही नहीं आप लोगों के पास अवेलेबल डेटा, बट आप लोगों के पास एक ट्रेंड है, you have a line. By this line you can predict the value of y. If you know the value of x, just put in the value of x over here. So y is nothing but, according to your model, y is 25 into 10, which is nothing but 250. So you have predicted the value of y. You have predicted the value of y for an unknown value of x. x का वैल्यू आपके पास नोन नहीं था, ये 10 आपने लिया ही नहीं एक्सपेरिमेंट में. For an unknown value of x, you find out the value of y. Is it okay with everybody? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let me give you a real life example on this. Again, let me share a real life example. Let us say you are a technical person and somebody comes to you to, let's say somebody wants to sell a house, and you have a data that this is the area of the house and this is the price, the selling price of the house. कितने में बिका था वो घर, ये आपके पास डेटा है. Let us say the area of the house is 750 square feet. This is in square feet, and the price is in Indian rupees or whatever, in lakhs. Let us say this is 18 lakhs, 800. Let us say this is 20, some 900. Let us say this becomes 23, some 1000. Let us say this becomes 30, whatever it is. So you have this data. आपके पास ये data है. And if you have this data and somebody comes to you, you are a technical person, and says कि भैया मेरा जो घर है वो घर is around 975 square feet. What should be the selling price? मुझे कितना प्राइस मिलेगा, थोड़ा आप बता सकते हैं? sir. Between 23 20 and No. You cannot give a range. You have to give a price. आपको एक prediction करना है. आप लोग क्या करेंगे? What will you do? This is your, please understand, this is your X. Is it okay? And this price is your Y. What will you do? Students? Y equal to mx plus c. yeah, first Plot a graph. draw the graph. Yes. Find out this. Yes. If it is a linear graph, let us say for simplicity मैं पकड़ के चलता हूं कि ये जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है लगभग. अप्रोक्सीमेटली दिस इज लीनियर. देखो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर सकता है. एज ऑफ द हाउस पे डिपेंड कर सकता है, घर कौन से एरिया पे है वो डिपेंड कर सकता है, घर में कितने बाथरूम्स हैं, कितने बेडरूम्स हैं, कितने रूम्स हैं, उस पर डिपेंड कर सकता है. हर चीज पे डिपेंड कर सकता है. बट लेट अस से हम लोग सिर्फ एरिया ऑफ द हाउस पे फोकस कर रहे हैं कि कितना एरिया है हाउस का, सुपर बिल्ट एरिया कितना है, एंड द प्राइस. एंड लेट अस से दिस इज अ लीनियर फंक्शन. कुछ ऐसा फंक्शन मिलेगा आप लोगों को. ये लगभग थोड़े डेटा पॉइंट्स आप लोगों को हमेशा इधर उधर मिलेंगे. Discrete data points that you would get. What will, this is your price and this is your area.
what will you do? You will plot a graph, and if it is a linear graph, you will get a line like this. Am I right, students? Yes, sir. Yes, sir. Right, sir. और अगर आपको ये लाइन मिल गया, ठीक ठाक लाइन मिल गया, द करेक्ट लाइन, दैट इज ये वाला फॉर्मूला अगर करेक्ट मिला आपको, y is equals to mx plus c वाला फॉर्मूला अगर आपको करेक्ट मिल गया, देन अगर किसी ने आपसे पूछा कि प्लीज टेल मी मेरे घर का कितना प्राइस हो सकता है, 975, जो कि आपके डेटा में नहीं है, you do not have that 975, you just plug in that value with this x, because for this line you know m, आप लोगों को m पता है, and you know c, आप लोगों को c भी पता है, सिर्फ x को पुट करना है. You just need to put this value of x in the equation of the line and you would get the value of y, that is the price of the house. And you can say that person कि अच्छा देखो, this is the price of the house, this is the expected price of the house, this is the prediction that you make from for unknown data. ये 975 unknown data था आपके पास, ये आपके पास नहीं था, आपने predict किया उस बंदे के लिए. What whoever comes to you, you have predicted for that person that what should be the price of the house, so you make a prediction. Is it okay? Okay, sir. Yes, sir. Yes. तो basically graph draw अगर कर लेंगे, so that is the second motivation. If you draw a graph, then you can predict the future, or you can predict for unknown data. Unknown data के लिए आप predict कर सकते हैं. Sir, if we do it in that way, then I think y should be the area and price should be x. No. Why? No. Please understand this. X. Now let me come to this point. Okay, what should be x, students? अच्छा, x क्या होना चाहिए? So let me clarify this point. जब आप draw करेंगे, what should be x? X क्या होना चाहिए? Area. नहीं, generally x क्या होना चाहिए? इसका एक नाम है. Do you know this? Independent variable. Independent variable. Yes. X is basically the independent variable. And y is the dependent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. इट चेंजेस ऑन इट्स ओन, इट इज इंडिपेंडेंटली चेंजिंग. y is dependent on x. अभी हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा ना, y is nothing but a function of x. So y is dependent on x. So y is the dependent variable. In the previous example, area is changing independently, आपका कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन क्योंकि एरिया ऑफ द हाउस इज चेंजिंग, अगर एरिया बड़ा है घर का तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा. सो प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन एरिया. अगर घर का एरिया ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा है. Is it okay? So area is the independent variable and price becomes the dependent variable. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let me give you another examples from engineering science, engineering disciplines. Let us say you are in an industry and you know you are in a manufacturing industry. Let us say आप एक manufacturing process में हैं, आप engineer हैं, manufacturing process में हैं, आप machines बना रहे हैं. Let us say automobile का एक engine है, वो आप बना रहे हैं. जब आप ऑटोमोबाइल का इंजन बना रहे हैं, उसका वाइब्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं. लेट अस से यू आर डूइंग अ वाइब्रेशन एनालिसिस ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन, और आप लोगों के पास डेटा है दैट अगर वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन का जो साउंड है, आप उसको टेस्टिंग कर रहे हैं. यू आर टेस्टिंग अ मशीन. लेट अस से यू आर टेस्टिंग एन इंजन. लेट अस से आप इंजन को टेस्ट कर रहे हैं. सो लेट अस से आपके पास डेटा है कि साउंड कर रहा है इंजन, टेस्टिंग के टाइम साउंड कर रहा है. साउंड इज इन डेसिबल. अगर कुछ साउंड कर रहा है, लेट्स से 20, 30, 40, 50 डेसिबल, देन
the probability of that engine malfunctioning in 1 year is, let us say, 0.002. This is the probability. किस बात का probability है ये? This is the probability that the machine will malfunction within 1 year. Engine will malfunction within 1 year. अगर 20 डेसिबल बना साउंड कर रहा है तो 30 कर रहा है तो 0. let us say 0.5. 40 कर रहा है तो 0.8 or no 0.0 let us say 8. अगर 50 डेसिबल कर रहा है it is 0.2 let us say. अगर 60 डेसिबल कर रहा है तो let us say it is 0.5. और अगर 70 डेसिबल कर रहा है then let us say it is 0.82, something like this. So if it is making, please understand, if the engine is making 70 decibel of sound, then it is 82% probable that the engine will malfunction within 1 year. गाड़ी का इंजन अगर 60 डेसिबल साउंड कर रहा है टेस्टिंग के टाइम पे, तो वो इंजन देखा गया है कि 1 साल के अंदर 50% चांस है उस इंजन का मैल फंक्शनिंग का. अब आप टेस्ट कर रहे हैं, यू हैव दिस डेटा, प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव दिस डेटा and you are testing a particular engine and that engine is making a sound of 32 decibel. Would you suggest that engine to go to the market? मान लीजिए कि आप 50% से ऊपर अगर प्रोबेबिलिटी है तो आप उसको बोल रहे हैं डिफेक्टिव. ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% को आप बोल रहे हैं दिस इज डिफेक्टिव अगर प्रोबेबिलिटी है तो, और लेस देन 50% है तो you are making it, you are stamping it okay. तो एक बात बताइए, if it is making 32 decibel, तो what is the probability अगर आपसे कंपनी पूछे कि 1 साल में खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, how will you do it, students? By drawing graph and finding flow. Yes, you will draw this graph. आपके पास ये डेटा है, आप इस डेटा के साथ क्या करेंगे, इस डेटा का एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट है यू वुड ड्रॉ अ ग्राफ. हो सकता है लीनियर लाइन नहीं आए, हो सकता है लीनियर लाइन नहीं आए, हो सकता है कुछ ऐसा लाइन आए. लेट अस से दिस इज योर साउंड डेसिबल एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी. हो सकता है कुछ ऐसा ग्राफ आए, हो सकता है. But whatever this graph is, again your y can be written as some, let us say, a square root of x plus some b. Let us say कुछ ऐसा हो सकता है, because ये लीनियर तो है नहीं, मैंने जो ग्राफ बनाया है वो somehow parabolic है, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. के पास आपने जब ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ये कर्व, नाउ दिस इज अ कर्व नॉट अ स्ट्रेट लाइन. हम लोग आज कर्व के बारे में बात नहीं करेंगे, डोंट वरी, वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइंस, बट मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं. इफ यू नो दिस कर्व, अगर आपको इसका मैथमेटिकल इक्वेशन पता चल गया, तो आप किसी भी x को, यानी पता चल गया मतलब क्या पता चलना है, a एंड b. यू नो a, यू नो b. अगर आपको पता चल गया व्हाट इज a एंड b, you just put the value of unknown value of x, put कर दीजिए, यहाँ पे 32 put करिए, तो आपको probability मिल जाएगा. and you can give it to the company कि सर देखिए, अगर ये इंजन 32 डेसिबल साउंड कर रहा है, मेरा अनुमान है the probability is around 0.062, that is 6.2% chances are there. Let us say, for example, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it is up. So as an Yes, sir. engineer, it is up to you to mark it okay. 6.2% मतलब ठीक है, मैं मार्क कर सकता हूँ. 50% से ज्यादा हुआ तो मैं उसको डिफेक्टिव बोल के I won't put it across the market. लोगों को यूज करने के लिए वो इंजन हम लोग नहीं देंगे. So this is the real life applications मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. Real life में please understand, you need to analyze data. Let it, please don't think कि अगर CSC, AIML, data science, IT ही data analytics करेंगे.
दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल दिया। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में भी आप लोग इंजन टेस्ट करेंगे, मशीन टेस्ट करेंगे। So everybody in this industry right now, we are all surrounded with data. आज के डेट में we are all surrounded with data, और इंडस्ट्री में डेटा एनालिसिस करने वालों को की बहुत जरूरत है। So please understand, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है, आपके पास एडेड एडवांटेज है, you know about the engine. If you are an electrical engineer, you know about the machine. आपको मशीन के वर्किंग्स के बारे में भी पता है। एंड इफ यू नो द डेटा एनालिसिस पार्ट, तो आप डेटा एनालिसिस करके भी कंपनी को बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट शुड बी द फ्यूचर स्टेप्स दैट द कंपनी शुड टेक। सेल्स में आप हेल्प कर सकते हैं कि सेल्स इंप्रूव कैसे करें, बाय जस्ट डूइंग डेटा एनालिसिस। इट डजंट मैटर कि आप कौन से ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में हैं। इज इट ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I think these are the two basic motivations for drawing graphs. Are you all motivated for this? कि हाँ ठीक है, ग्राफ्स ड्रॉ करना चाहिए। Do you think it is Yes, important? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine, right. So अब हम लोग टेक्निकलिटीज में जाएंगे कि ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करें। I'll quickly move over because time constraint is there. I have 2 hours time and there is lot to tell, so I'll quickly move. So मान लीजिए पहले मैं आपको कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मेन टॉपिक पे घुसेंगे हम लोग। दिस इज योर ग्राफ पेपर, दिस इज योर ग्राफ पेपर। आप लोगों ने सबने ग्राफ पेपर देख रखा है? I assume that you all have Yes, seen a graph paper. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, सो ग्राफ पेपर में कुछ टेक्निकलिटीज की बात मैं कर देता हूं। ऑलवेज ट्राई टू यूज द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर। देखो, ऑलवेज यूज ग्रेटर देन 80% ऑफ योर ग्राफ पेपर। ग्राफ को यूज करो, यानी मान लो आपके पास एक डेटा है, यू हैव अ डेटा लाइक दिस, एक ऐसा डेटा है x एंड y, सम डेटा इज देयर एंड यू प्लॉट द डेटा। ऐसे करके आपने प्लॉट कर दिया, x यहां से शुरू हुआ और यहां पे x खत्म हो गया, और आपका y यहां से शुरू हुआ और यहां पे y खत्म हो गया। मत करिए, कितना कितना आपने यूज किया, हार्डली इतना एरिया आपने यूज किया ग्राफ पेपर का। दिस इज रॉन्ग, never do this, never do this. Always try to use greater than 80% of your graph paper. So I would suggest, and you should always do this, कि आपको स्केलिंग कैसे करना है। आपको स्केलिंग इस तरह से करना है, your scale, you should choose your scale in such a way कि आपके जो एक्सिस होंगे, यानी x एक्सिस और y, ये जो वेरिएबल्स जो होंगे, y यहां से शुरू हो और यहां पे खत्म हो, यानी आपका मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस शुड बी योर y मिनिमम एंड हियर शुड बी योर y मैक्सिमम। सिमिलरली दिस शुड बी योर x मिनिमम, और यहां इस तरह से स्केल को चूज करिए ताकि यहां आपका आए x max, so that you can use around 80 to 90% of your graph paper. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. This looks good to the eyes, और आपका स्केलिंग भी बिल्कुल प्रॉपर है, ग्राफ अच्छा खासा बनेगा। सो प्लीज ग्राफ को छोटा मत बनाइए, स्केल को इस तरह से मत करिए कि यहीं से x स्टार्ट होकर यहीं पे x खत्म हो जाए। आपका जो डेटा है वो इस तरह से स्केल करिए कि यहां से x शुरू हो और लगभग ग्राफ पेपर के एंड में जाके ही x खत्म हो। सिमिलरली y यहां से शुरू हो और y का जो मैक्सिमम है वो लगभग एंड में जाके y मैक्स हो। तो अपने स्केलिंग को इस तरह से करिए। प्लीज डू द स्केलिंग प्रॉपरली। सो इसका ये मतलब है, ऑलवेज यूज 80%, मोर देन 80%, मतलब स्केल योर ग्राफ प्रॉपरली, स्केल योर ग्राफ properly.
right? Next, heading. ग्राफ का हमेशा एक हेडिंग होना चाहिए. जो आपका ग्राफ देख रहा है उसको पता होना चाहिए किस चीज का ग्राफ है, कौन सा वर्सेस क्या ग्राफ है. This the person sitting in front of you must know. So let us say this is your profit, and this is your, I'm sorry, this is your number of labors, and the y-axis is profit. So the heading must be profit versus number of labors. Always put a heading. Always put a heading. हमेशा हेडिंग डालिए. हेडिंग इज मस्ट. क्या वर्सेस क्या है उसका हेडिंग डालिए. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, label your axis. Label your axis with proper units. जैसे say for example यहाँ पे number of labors, let me rub this. Just a bit clumsy, so I'll just. So okay, so let us say this is your temperature. Say for example, this is your temperature and your y-axis is your voltage. So please name them. What is x-axis? This is your graph. This is your graph. Please write, this is, even if you write it in short, temperature, temp, and this you write voltage V, and always put in brackets what is the unit at which you are measuring the temperature. Is it in degrees Celsius? Is it in Fahrenheit? Is it in Kelvin? So please mention this is Kelvin, let us say, with an arrow. This arrow is telling the direction in which the x variable is increasing. Similarly, voltage, let us say you write volt and in brackets you write V. So in voltage, it can be millivolt, it can be microvolt, it can be anything, it can be volt. So the units that you are measuring in, you write it in brackets and you put an arrow. So that is very, very important to label your axis with proper units. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. And the last thing that is very, very important, that is write your scaling. Or let me you should explicitly mention your scaling. आपने किस तरह से स्केल किया है ग्राफ को, ये आपको मेंशन करना जरूरी है. कहां करेंगे मेंशन आप? टॉप राइट कॉर्नर, ये मैंने बनाया बॉक्स, टॉप राइट कॉर्नर, यहां पे आप लोग स्केलिंग मेंशन करेंगे. कैसे मेंशन करेंगे स्केलिंग, बता रहा हूं. So I'm rubbing this. Can I rub the screen, students? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. So scaling कैसे करेंगे? Let us say आपके पास टेम्परेचर और वोल्टेज का डेटा पॉइंट है. So temperature is 25 Kelvin. Voltage is, let's say, 2 volt. Next, this is 30 Kelvin. Let us say this is 2.5 volts. Let's say this is 35
7 Kelvin. This is 3 volts. Let us say this is 42. This is 3.8. And let us say this is 48. This would be 4.2. Let us say this is 55. This is 5. And let us say this is 60. And this is 5.6. So let us say this, you have a temperature and you have a voltage, the data. तो आपने ग्राफ प्लॉट करना है. आपका मिनिमम वैल्यू क्या है? 25 and the number of divisions are there. So let us say आपका मैक्सिमम है 25 और आपका मिनिमम है 25 और आपका मैक्सिमम है 60. So let us say you start with 0. So 25 यहां लगभग होना चाहिए, let us say, और यहां आपका होना चाहिए 60. And in between, आपके ग्राफ पेपर में in between, let us say how many divisions, what is the difference between max and min? Let us say this, or 0 and 60 के बीच में. Let us take 0 as your origin and 60 is there. So the difference is 60. और मान लीजिए आपके ऐसे 10 divisions हैं इसके बीच में, 0 और 60 के बीच में 10 divisions हैं ग्राफ पेपर में. So what is 10 division मतलब 10. Have you seen a millimeter graph, students? Have you seen a millimeter graph? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर आप ध्यान देंगे Yes, sir. तो ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं ग्राफ पेपर में, और इन बॉक्सेस के अंदर 10 छोटे छोटे और बॉक्सेस बने होते हैं. Am I right? 10 छोटे छोटे और बॉक्सेस बने होते हैं. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Yes, sir. ये एक बड़ा बॉक्स मैं बात कर रहा हूं. 10 मान लो ये एक बड़ा बॉक्स है. 10 divisions are there. 10 big boxes are there. So what is one big box equal to? एक बड़ा बॉक्स कितना है? अगर 10 बॉक्सेस को आप 60 पकड़ रहे हैं, so एक बड़ा बॉक्स कितना है? What is one big box? 6. So one big box would be, so let me rub this just a second. Let me rub this 25 for you. So one big box would be 6. Next it would be 12. Next this would be 18. This would be 24 and so on. Is it okay? Yes, sir. So एक बड़ा बॉक्स अगर 6 है तो एक छोटा बॉक्स उसके अंदर कितना है? इसमें भी 10 बॉक्सेस हैं. Yes, sir. Yes, sir. So that is your scaling. आप scaling में क्या लिखेंगे? One smallest division along x-axis is equal to. इस केस में कितना होगा? One smallest division along x-axis. Smallest division मतलब इतना छोटा. 0.6. हाँ, 0.6 volts. Units लिखेंगे जरूर. Is it okay with everybody? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Repeat it. हाँ. Yes, sir. आपका एक बड़ा डिवीजन कितना था? एक बड़ा डिवीजन 6. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. और एक बड़े डिवीजन के अंदर 10 और छोटे डिविजन्स हैं. 10 small divisions are there. Am I right? Sir, it is 0.6 Kelvin. Oh, I'm sorry. Right. Very good. Yes. It should be 0.6 Kelvin. This is temperature. Correct. So this is temperature in Kelvin. So this should be Kelvin. Okay. हाँ, तो एक बड़ा डिवीजन कितना है? 6 केल्विन. Yes. एक बड़ा डिवीजन जो है Yes. ये 6 केल्विन है. तो एक छोटा डिवीजन कितना है? ये वाला. Let me color it in a different this small one. ये छोटा वाला, ये वाला कितना होगा? 6 divided by 10. So 0.6 Kelvin. Similarly, y-axis के लिए भी आप ऐसा ही करेंगे. तो मान लीजिए y-axis भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और आपका यहाँ पे मैक्सिमम है 5.6 और आपका मैक्सिमम है मान लीजिए 6. से फॉर एग्जाम्पल 6 तक लिया है आपने, क्योंकि आपका मैक्सिमम है 5.6 तो आपने थोड़ा बढ़ा के ले लिया
you take 6 और इस बीच में आपका 10 डिविजन है. Again, let us say. So what is one big division? 0.6. Kelvin. 0.6. One 0.6 volt. one big division is basically 0.6 volt. Sorry, sir. हाँ 0.6 volt. तो one smallest division कितना होगा? So one 0.06 volt. हाँ one smallest division along y-axis along y-axis would be 0.06 volt. Is it okay, everybody? Yes. Yes, sir. तो ये पूरा चीज जो है मैंने इतना बड़ा करके लिखा है, आप छोटा करके लिखेंगे. ग्राफ के ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आप लोग ये लिख देंगे. यानी जो भी आपका ग्राफ देख रहा है उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इसके एक्स एक्सिस में एक छोटा डिवीजन कितना है और इसके वाई एक्सिस में एक छोटा डिवीजन कितना है. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो मैंने जो एग्जांपल दिया स्केलिंग का, हो सकता है 60, यहाँ पे मैंने 60 लिया था, 10 डिवीजन है 60 के अंदर. अगर 20 डिवीजन होते तो आपका वन स्मॉलेस्ट डिवीजन चेंज हो जाता. अगर यहाँ पे 20 डिविजन होते तो आपका वन स्मॉलेस्ट डिवीजन चेंज हो जाता. 20 डिवीजन अगर होते तो वन स्मॉलेस्ट डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस हो जाता, वन स्मॉलेस्ट डिवीजन अलोंग 0.2. अलोंग 0.2 sir. एक्स एक्सिस हो जाता 0.3. 0.2. 20 डिविजन अगर होता तो 60 को 20 से डिवाइड करो तो एक बड़ा डिवीजन होता है 3. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3. तो एक छोटा डिवीजन बन जाएगा 0.3 केल्विन. इज इट ओके? तो ये डिपेंड कर रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 10 डिवीजन है 60 के बीच में. आप लोग स्केलिंग इस तरह से कर रहे हो कि उसमें 15 डिवीजन है तो उस हिसाब से डिवाइड करो. इट इज अप टू यू हाउ यू स्केल. सो अकॉर्डिंग टू योर स्केलिंग आपका वन स्मॉलेस्ट डिवीजन निकलने वाला है. इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप लोग स्केल कैसे कर रहे हो. एवरीबडी अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So now coming to a bit more interesting but a bit more difficult part, relatively difficult part, कि अच्छा ये लाइन कैसे ड्रॉ करें. मैंने तो बोल दिया था कि आपके पास डेटा है वो आप लाइन ड्रॉ करते हो. इसको पता है क्या बोलते हैं? डू यू नो व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर इट? आप लोगों को पता है ये जो लाइन आप लोग ड्रॉ करते हो उस लाइन को क्या बोलते हैं? जानते हो आप लोग? Is it abscissa or coordinate? No. This is abscissa and coordinates are these. Ordinates are these. ये वाले. मैंने जो लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला था आपको. आप लोग एक लाइन ड्रॉ करते हो ना, डेटा पॉइंट्स. Line of best fit. Yes, very good. May I know the name? Sir, Noina Ghosh. Noyona Ghosh. Very good. It is called the line of best fit. So now we will learn how to draw the line of best fit. अब आप लोगों के पास क्या है? प्लीज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. आप लोगों के पास क्या है? You have raw data. Please understand this. You have raw data. आपके पास x है और आपके पास y है. Is it okay? मैं y के नीचे एक measured लिख देता हूं. m. ym मतलब y measured. जो आप लोग एक्सपेरिमेंट में नाप रहे हो, मेजर कर रहे हो, दैट इज y measured. Is it okay? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us take an example. The example is, let us say x is 0, y measured is 0. X is, let us say 4,
y measured is 8.1, x is 8, y measured is 15.9. Just an example. आपके पास ये आया, right? So what you have is you just plot this. तो आपने x डाला है यहाँ पे, whatever x is, y measured डाला है यहाँ पे. Is it okay? और आपका ये एक पॉइंट है, you have this point, the origin as 1 point. देखो 0 0. Next is यहाँ पे 4 और यहाँ पे मैं मान लेता हूं this is 8, this is 8, this is 4, this is let us say 8 and this is let us say 16. तो एक पॉइंट है थोड़ा सा 8 से ज्यादा और यहां पे ये पॉइंट है थोड़ा सा 16 से कम. So you have this graph. You have the experimental points. आपके पास ये experimental points है. You want to draw a line जो इस experimental data को fit करे. So that यानी आपको क्या चाहिए? You want a line, you want the equation of the line mx plus c. आपको ये चाहिए ना? You want this? Am I right, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए, तो अगर आपको ये लाइन चाहिए, यानी आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? क्या क्या चाहिए? क्या दो चीजें आपको निकालनी है? M or C. M and C. M and C. So you have to find m and c. You have to find m and c. अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए. Let me change it to a different color. If I say that this is the line, आप मानेंगे मेरी बात को? No. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. No. No, sir. Okay. If I say this is the line, आप मानेंगे मेरी बात को? No, sir. sir. No, sir. No, sir. तो ये दोनों ही लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस के अपने अपने m हैं और अपने अपने c's हैं. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So you have to find a line जो इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी ताकि अगर बाद में अगर आपको प्रिडिक्ट करना हो किसी अननोन x के लिए तो आप ठीक से प्रिडिक्ट कर सके. बिकॉज ये लाइन अगर आपने ले लिया रेड वाला तो आप गलत प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर में. अगर आपने ब्लू वाला लाइन ले लिया तो भी आप गलत प्रिडिक्ट करने वाले हैं. बिकॉज दीज टू लाइंस आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द डेटा वेल, दे आर नॉट फिटिंग द डेटा वेल. आपका डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा को ये दोनों लाइंस फिट नहीं कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू नीड टू डू? यू हैव टू फाइंड आउट द लाइन ऑफ व्हाट? Best fit. बेस्ट. Line over. तो यही काम है आप लोगों को लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालना है. अच्छा, नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ डू यू फाइंड आउट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट? आप लोगों ने स्कूल में कभी किया है? ग्राफ्स तो आप लोग स्कूल में भी ड्रॉ करते थे, कभी किया है? স্যার এলপিপির ভেতরে By taking কিছু the- করেছিলাম মনে হচ্ছে by finding the slope. স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ বলো. Yes. স্যার এলপিপির ভেতরে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর ভেতরে কিছু করেছিলাম এরকম. What did you do? What did you do? Sir, take the number of আমরা, plots means the I think maximum multiple number of points plots है, in that এরকম Maximum multiple number of points points. আমাদের ওই কোশ্চেনটা পড়ে বার করতে হয়েছিল আর সেগুলোর ভেতরে কিছু লাইন দিয়ে একটা এরিয়া বার করতে হয়েছিল. সেই এরিয়ার মধ্যে মানে প্রফিটের রিজিয়নটা কে ইন্ডিকেট করা হতো. No, but somebody. Sir, the Sir, bar-bar line containing plots. Defined in such a way that So the the maximum number of plots that belong to that line. Okay. Maximum number of points belong to that line. Let me give you another example. अच्छा ये for the time being students इस डेटा को भूल जाइए. मान लीजिए आपके पास एक ऐसा डेटा है y x. आपके पास आप लोगों ने प्लॉट किया है डेटा and you get this. You get this. Say suppose just a second.
let me erase this a bit. If I draw this kind of a line, or I'm sorry, but this is not giving me the right. Just a second. Just give me 1 minute. Okay, so this is passing through 4 points. Can you see, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Do you think this line is the line of best fit? No, sir. No, it is No, sir. mostly curved. No. Why? This is passing through maximum number of points. 7 points में से 4 points में से pass कर रही है. So this is passing through maximum number of points. Why isn't this the line of best fit? So the line will be the line of best fit if the points have minimum distance from the line, all the points. Okay, now this is the technical part that you have spoken to, but how do you know? Okay, fine. That is exactly the answer that I was looking for again. But why is this? Do you think just by looking at the line, you people said, और आप लोगों ने सबने आंसर ठीक दिया है मुझे कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं है. क्यों नहीं है? जस्ट देखने से क्यों नहीं है? बता सकते हैं आप? So the Because point. last 2 points are very far away from the line. No, it's not that. Please understand. Please So understand. the points will be equally distributed. Yes, very good. Your name? To him. Tuhin, very good Tuhin. Yes, here देखो आप लोगों को देखने से थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि there is an asymmetry to this line. इस लाइन में 4 पॉइंट से तो ये लाइन पास कर रहा है, बट बाकी जो 3 पॉइंट्स है वो तीनों ऊपर हैं, नीचे नहीं है कोई भी पॉइंट लाइन के. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. your line of best fit should be something such that more or less equal number of points lie on either side of the line. एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए जिसमें लगभग सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन के ऊपर और सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन के नीचे लाई करे. सो रफली स्पीकिंग लाइन कैसा होना चाहिए? रफली मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं. रफ आई एस्टिमेशन आपका आपका लाइन लगभग, दिस इज जस्ट अ सेकंड, दिस इज, let me rub this. This is trouble. So your line should be something like, कुछ ऐसा हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let me rub this. Can you see this? Yes, sir. Yes. Can you see this, Yes, sir. students? Yes, it's fine. Yes, sir. Yes, sir. So you can see it is passing through this point. It is passing through this point. It is passing approximately through this point. देखो 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं और ये 2 पॉइंट्स लाइन के नीचे लाई कर रहे हैं. So can you see this? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. It's okay. So roughly speaking, roughly इसको बोलते हैं the first method to draw the line of best fit. लाइन ऑफ बेस्ट फिट को ड्रॉ करने का क्या तरीका है? पहला तरीका आई एस्टिमेशन. But this is very rough method, very rough method to do. So there are high chances, there is a high chance
of getting errors. ये आपके आई पर है कि आप कितना अच्छा आई एस्टिमेशन कर रहे हैं. This is a rough method, so there is a high chance of getting errors. Is it okay? But कर सकते हैं आप लोग. अगर ठीक ठाक आई एस्टिमेशन हुआ तो आप लोग लगभग एक ठीक ठाक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर सकते हैं. Am I clear to everybody? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we will talk about the mathematics of drawing the exact line of best fit. मैं exact equation, हम लोग exact, उससे better line नहीं हो सकता. What is the line? Please understand, the line of best fit is the line that is fitting your experimental data the best. तुम्हारे experimental data को ये line बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे बढ़िया और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. इज इट ओके विद एवरीबॉडी? So you will be finding out the equation. So basically you will be finding out the equation of the line. ये equation हम लोग निकालने वाले हैं और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कई बार हम लोग इसको मॉडल भी बोलते हैं. और लेकिन जब आप मॉडल बोल रहे हो तो मॉडल से आप लोग समझते हो कोई एक प्रोटोटाइप जो आप डेवलप करते हो. इन दिस केस इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल. इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल. सिंपल मॉडल नहीं है, ये मैथमेटिकल मॉडल है. यानी आप लोग क्या निकालना चाहते हो? व्हाट इज योर इंटेंशन? योर इंटेंशन इज टू फाइंड आउट y इज इक्वल्स टू mx plus c वाला इक्वेशन. यानी आप लोगों को निकालना है, you want to find out m and c for the line which best fits your experimental data. Is it okay, everybody? Okay, sir. Fine. Okay, sir. Can I rub the screen? Can I erase my screen? Yes. Yes, sir. So the second method is, this is the mathematics of it. This is called regression. And regression कुछ भी तरीके से हो सकता है. In this case हम लोग simple regression पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग लाइन को लेके डील कर रहे हैं. This is basically we will be dealing with linear regression. कैसे उस इक्वेशन को मैथमेटिकली निकाल सकते हैं हम लोग. अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग इतना डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, बट मैं आप लोगों को लॉजिक से वाकिफ करवाऊंगा. आई विल ट्राई टू गिव यू द लॉजिक बिहाइंड दिस इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, इसका एक लॉजिक देने वाले हैं हम लोग. अच्छा प्लीज आप लोगों को ग्राफ याद होगा. से फॉर एग्जाम्पल दिस इज माय 1 point, this is my 1 point, this is another point, this is another point, this is another point, this is another point. So let us say कि आप लोग लाइन निकालना चाहते हैं and let us say you choose this line. Let us say you choose this line. Is it the line of best fit, students? No, sir. No, sir. Now मैथमेटिकली आपको क्यों लग रहा है कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं है? कोई मुझे बता सकता है मैथमेटिकली क्यों लग रहा है? कोई चीज स्लोप बहुत लो है. हाँ स्लोप इज वेरी लो. Lying on the line. अच्छा मान लीजिए I से y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. मुझे इस लाइन का, रेड वाले लाइन का m पता है, c पता है, मैंने चूज किया है, मैंने या आपने, व्हाटएवर यू हैव चोजन दिस लाइन. तो आपको इस लाइन का स्लोप पता है, आपको इस लाइन का c पता है, इंटरसेप्ट पता है, एंड यू नो द इक्वेशन. तो आप लोगों को ये लाइन गलत इसलिए लग रहा है, somebody is telling me कि आप लोग बोल रहे हैं इसका स्लोप बहुत कम है. मैथमेटिकली इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग जानते हैं क्यों? अच्छा कोई चीज गलत ज्यादा
कोई चीज गलत है, इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, उसमें क्या ज्यादा है? Sir, white card. Errors. Error. Errors, right. So the error involved in this line is high. Error is high. Am I right, students? Yes. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब मुझे बताइए ये एरर मैथमेटिकली कैसे कैसे पता कर सकते हैं आप? एरर क्या है इस केस में? स्लोप और इन Slope is low. अच्छा, Distance from the एक point. हाँ, एक सेकंड, ऑल पॉइंट्स आर अबव। एरर एरर कैसे मैथमेटिक्स में, एरर कैसे? ऑल पॉइंट्स आर अबव बोल रहे हैं, ये तो आप लोग को दिख रहा है। मैथमेटिक्स को कुछ दिखता नहीं है, इक्वेशंस बात करते हैं मैथमेटिक्स में। सो दिस इज योर x, दिस इज योर y, ओके, दिस इज योर x1, लेट अस से दिस इज योर y1, दिस इज योर x2, दिस इज योर y2, यानी मैं रीडिंग्स की बात कर रहा हूं। x3 y3, ये कुछ भी हो सकता है, x4 y4, ऐसे रीडिंग्स हैं आपके पास। इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. and प्लीज अंडरस्टैंड, ये मान लो दिस इज मेजर्ड, m डाल देता हूं मैं, इज इट ओके? और यहां मैं सब जगह m लिख देता हूं, ym1, ym2, ym3, ym4, इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. यहां मैं इस इक्वेशन लाइन के इक्वेशन पे मैं इसको YL कर देता हूं, लेट्स से। प्लीज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, YL आपको पता है, आपको इक्वेशन पता है, यू नो M, यू नो C, आपने चॉइस किया, ये रेड लाइन आपने चॉइस किया, सो यू नो M, यू नो C। अच्छा, आपका डेटा क्या बता है? अगर x1 है मेरा इनपुट डेटा, व्हाट शुड बी द आउटपुट, व्हाट शुड बी द y डेटा? कितना होना चाहिए? YM1. ओके, अब मैं यहां लिखता हूं, प्लीज पे अटेंशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट करके आपने देखा, इफ x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू कितना है? YM1. ym1, and according to your model, according to your model, आपका मॉडल कौन सा है? आपने कौन सा मॉडल चॉइस किया है? ग्रीन वाला, नहीं नहीं नहीं, नहीं, रेड वाला. रेड वाला। Red दिस इज योर मॉडल, दिस इज योर मॉडल, है ना? ये है ना आपका मॉडल? यस सर। यानी आप कह रहे हैं कि आपका डेटा इस लाइन से मैं अच्छी तरह से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो आपका मॉडल ये है YL। तो अकॉर्डिंग टू योर मॉडल, if x is equal to x1, what is y? y क्या है? YM1. नहीं, it is YL1, वो कितना है? YL1 कितना होगा? YL1 होगा हाँ mx1 plus c. Am I right everybody, students? Yes, sir. तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये है x1, प्लीज स्टूडेंट्स पे अटेंशन, ये रहा x1। Am I right? Yes. x1 या x2 Yes. कुछ भी पकड़ लीजिए, दिस इज x1, ओरिजिन को छोड़ देते हैं, दिस इज x1। अच्छा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? हाउ मच इज दिस? Y1. IM1। Am I right? Yes. ये वाला ये पॉइंट है ना, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट। अच्छा, लाइन क्या बोल रहा है? प्लीज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, अगर x1 आपका वैल्यू है तो लाइन पे y कितना है? ये वाला है ना? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. तो हाउ मच इज दिस? ये कितना है? YL1.
YL1. YL1. तो ये है YL1 और ये है YM1. What is the error? M11 minus हाँ, so the error आप लोगों को लग रहा है, isn't it this distance? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So अगर मैं उसको लिख सकता हूं YM1 minus YL1. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Do you think this is right? Everybody. Yes. So हर एक का एरर कितना है? Please pay attention. अच्छा सेकंड का एरर कितना होगा? इस वाले का बोलो. एरर कितना होगा? यानी ये वाला है ना एरर. अच्छा ये वाला है ना एरर. अच्छा ये एरर मान लो E1 है. ये एरर है मान लो E1. तो ये एरर है E1. ये एरर कितना होगा? ये एरर होगा ना नेक्स्ट वाले के लिए E2. E2. ये एरर होगा थर्ड वाले के लिए E3. E3. ये एरर होगा फोर्थ वाले के लिए. ये एरर होगा फिफ्थ वाले के लिए. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. और अगर कुछ पॉइंट्स नीचे हैं तो ये एरर होगा सिक्स्थ वाले के लिए E6. लेट अस से मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं. ये मान लो बीच में और भी है शायद पॉइंट्स. कुछ और भी है. यहां मान लो 7th पॉइंट है तो ये हो गया E7. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. But do you think this is the right formula for error? एक क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं मैं. सर हमारे की This is एवरेज the error at a certain point. हाँ. This is the error at a certain particular value of x. Okay. So what is the total error? Average. It will be the average of the total errors. Average, Values of x. average or the sum? Average. 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 Okay. No, Average error adds up. Error will always add up. And if I take E1, what is the total error of this line? Sum of average. अगर आप ये लाइन चूज कर रहे हैं, ये मॉडल चूज कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड. अगर आप ये मॉडल चूज कर रहे हैं तो आपका टोटल एरर must be E1 plus E2 plus E3 and all. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But my question is, इंडिविजुअल पॉइंट के लिए भी क्या ये एरर सही है? क्या हमने ठीक एरर लिया है? Have It's we not the taken- perpendicular distance, so I don't think it's No, it is the not perpendicular. It is not the perpendicular. ये दोनों का माइनस तो यही है. आप दोनों को माइनस करेंगे तो यही आएगा ना, यही लेंथ आएगा ना. Isn't it? आप अगर YM1, ये रहा YM1 और ये रहा YL1, मैं दूसरे कलर में करता हूं. देखो येलो में कर देता हूं. ये रहा. अच्छा येलो में दिख रहा है. इज इट विजिबल? No, sir. Okay. No, sir. Let me try black. This is YM1 and this is YL1. इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है x के. ठीक है? Yes, sir. माइनस करेंगे तो. बट मेरा क्वेश्चन है, इज दिस द राइट फॉर्मूला फॉर एरर? सर हेलो. हाँ बोलो. मॉड ले लेंगे तो हो जाएगा. हाँ चलो गुड. नाम तमोग्नो सामंत. की नाम? तमोग्नो सामंत. Tomogno has given an option कि मॉड ले लेंगे. अच्छा मॉड का ख्याल क्यों आया Tomogno आपको? Why did you think of the mod? Was there any particular reason? স্যার এটা একটা পার্থক্য যেহেতু সেহেতু এটা পজিটিভই হবে সব সময়, ওই জন্য আমি ভাবলাম এটা মড নিলে হতে পারে. Okay chalo. Let's see Tomogno. I am very happy with the answer. Can I rub this slide? Can I rub it, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me get back to my example. This is my x. This is my y. Ym. So x is 0.
y is 0, or let's start with, okay, x is 4, y is 8.1, x is 8, y is 15.9. Is it okay? Is it okay? अच्छा, Yes, आप sir. लोगों को क्या लग रहा है स्लोप क्या है, स्लोप क्या होना चाहिए जनरल, आपको क्या लग रहा है इस डेटा से? 2, near about 2. नियर अबाउट 2। Nearly Near two. about हाँ, तो आपका YL जो होगा वो क्या होना चाहिए? 0, 8, 16। Am I right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, तो यहां मैंने YL लिख दिया और यहां मैंने जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहां मैंने YM लिख दिया। अच्छा, अब मैं 3 एरर्स पकड़ता हूं। एरर 1, दैट इज YM माइनस YL। सिंपल, बोलो तो पहला एरर कितना आएगा? पहला एरर 0। 0. द सेकेंड एरर 0.1. 0.1. द थर्ड 0.1. Minus 0.1. 0.1. माइनस 0.1। अच्छा, चलो अब यहां पे मैंने लिख दिया सम। व्हाट इज द सम ऑफ दीज एरर्स? 0. 0। इज इट ओके? अच्छा, Okay, sir. एरर नंबर 2, दूसरे तरीके से एरर निकाल लिया मैंने। जब तोमोग्नो ने बोला अभी YM minus YL modulus, what is the error? First one 0, 0. 0.1, 0.1. Am I right? Yes, sir. So what is the sum? 0.2. 0.2. अच्छा, मेरा सजेशन है एरर 3, थर्ड वन, let us take YM minus YL, not modulus but whole square. अब बोलो, what is the first one? 0. 0. This is 0.01. 0.01. This becomes 0.01, and this becomes 0.0. अब स्टूडेंट्स 3 तरीके से एरर किया हम लोगों ने। पहला वाला एरर दे रहा है, अगर मैं YM माइनस YL लेता हूं एरर 0 दे रहा है। इज इट राइट? No, sir. No, sir. एरर 0 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज YL और YM एग्जैक्टली सेम तो है ही नहीं, थोड़ा डिफरेंस है ना। Yes. तो ये जो मेरा लाइन है ये मेरे डेटा पॉइंट्स को एग्जैक्टली तो फिट नहीं कर रहा है, तो मेरा Okay. एरर कुछ ना कुछ एरर तो आना चाहिए। एम आई राइट? हाँ sir, whether positive or negative. हाँ. राइट। लेकिन अगर मैं YM माइनस YL करता हूं सिर्फ, तो मेरा एरर देखो 0 दे रहा है, which is wrong. Am I right? Yes. Yes, sir. अब टोमोग्नो वाला पार्ट, if I take the modulus, तो मेरा कुछ ना कुछ एरर दे रहा है। Am I right? 0.2. Yes, sir. But don't you think कि ये जो लाइन है ये बहुत अच्छे से लगभग इस डेटा पॉइंट को फिट कर रहा है? Not exactly, but very well fitting the data point. Am I right? Yes, sir. Isn't 0.2 very high error Yes, sir. as compared to 0.02? Am I right? Yes, No, sir. sir. So technically, what should be my error? 0.02. नहीं, एरर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? Yes. So the error must be YM minus YL whole square. Is it okay, everybody? Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So हमारा लाइन कौन सा लाइन बेस्ट फिट होगा? Can anybody tell me? What should be the best fit line? Okay, the error must be, please understand, the error must be sum over all these. Am I right? Yes, sir. Yes, sir.
So that is the net error of a line. एक लाइन का ये एरर है, ठीक है? So what? कौन सा लाइन बेस्ट फिट लाइन होगा, कोई बता सकता है? Which? When ym is equal to yl. वो तो कभी हो भी नहीं सकता टेक्निकली. Which line is the best fit line? So when you have minimum Sorry, I can't hear you. error. Yes. किसी ने बोला ym इक्वल टू yl होगा. आपका डेटा हमेशा एक समान नहीं आ रहा है. यहां देखो 0, 8.1, 5, 15.9. इसको आप एग्जैक्ट किसी लाइन से फिट कर ही नहीं सकते हो. एग्जैक्ट फिटिंग नहीं होगा. अप्रोक्सीमेट फिटिंग ये ही लाइन है. देखो, which line is the best fit line? The answer to that question is whose error is minimum. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. यानी ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन एरर का जो फंक्शन है, ये फंक्शन को क्या करना है आप लोगों को? मिनिमाइज करना है. Yes. Is it okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या तरीका हो सकता है? Can I rub this off? Can I rub my screen? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, this is your data point. ओके, क्या करेंगे हम लोग? लेट अस से आई टेक दिस लाइन. इस लाइन का मुझे क्या पता है? व्हाट डू आई नो? mx plus m and c. MNC. व्हाट विल यू कैलकुलेट? इस लाइन से आप, इस लाइन के बाद आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ये YL है, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? व्हाट विल यू कैलकुलेट? You will calculate the error for this line, right? Is it okay? Yes, Okay, sir. sir. Yes. Calculate the error for this line. एरर कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सारे, ये जो डिस्टेंसेस स्क्वायर करके, ये सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे. Am I right? हाँ सर. Yes, sir. तो मान लो ये वाला आपका आया आंसर del 1, टोटल एरर del 1 आया. ये है आपके पास. अच्छा, आप लोगों ने देख लिया कितना डेल है. नेक्स्ट लेट अस से आप लोगों ने लाइन को चेंज कर दिया. यू चूज दिस लाइन. नाउ आपके पास एक और इक्वेशन है, y is equals to another m x plus c. ये चॉइस किया आप लोगों ने. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. इस लाइन के लिए भी एरर निकल जाएगा. देखो ये डिस्टेंसेस, अब मैं ग्रीन से बना रहा हूं. Yes. ये डिस्टेंसेस का स्क्वायर निकल जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you do what? You again calculate the error. Is it okay? Del 2 Okay, नाम sir. दो. अच्छा, फिर आपने ट्रायल किया एक और लाइन का. यू टेक दिस लाइन. इस लाइन का अगेन आपके पास क्या है? y is equals to mx plus c and you again find out the error. ये एरर है, निकल सकता है. डिस्टेंस स्क्वायर्ड. Yes, sir. Again you calculate the error and you get another error. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you take another line. ऐसा कुछ लाइन लिया. इस लाइन का भी y is equals to mx plus c है आपके पास and you find out again. ये येलो से बना रहा हूं मैं, ये एरर्स. डिस्टेंस आप लोगों ने फिर से कैलकुलेट द एरर फॉर दैट लाइन. उस लाइन के लिए आपने एरर निकाला डेल्टा 4. ऐसे करते करते
कितने लाइंस चॉइस कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स? हाउ मेनी लाइंस कैन यू मेक अ चॉइस? इनफाइनाइट लाइन चॉइसेस। वेरी गुड, इनफाइनाइट। आप ये जो चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लीज, आप ये जो चेंज कर रहे हैं, ये क्या चेंज कर रहे हैं आप? यहाँ पे जो चेंज हो रहा है ये क्या? हाँ, Slope स्लोप एंड इंटरसेप्ट। लेट से इस केस में सिर्फ स्लोप ही हो रहा है, बट आप लोग स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों चेंज कर रहे हैं। यू आर बेसिकली चेंजिंग द लाइन। आप लोग लाइन चेंज कर रहे हैं ना? लाइन चेंज करना मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बाय you mean that you are changing the M and C. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. ये चेंज कर करके आप हर एक लाइन के लिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? For every line you are calculating the error for that line. हाँ, और ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारे एरर्स आ गए। आप लोगों को कौन सा लाइन चॉइस करना है? Minimum error. Minimum error. जिसके लिए डेल्टा जो है वो क्या हो? Minimum. सबसे छोटा मिनिमम है। हाँ, so that line would be the line of best fit. Am I right? Yes, sir. उस लाइन का M और उस लाइन का C आप लोग चॉइस करेंगे। Am I right? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. यानी सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप एक लाइन ले रहे हैं, उस लाइन का आपने एरर कैलकुलेट कर लिया। आप लोगों ने देखा अच्छा खासा एरर आ रहा है, ठीक है, लाइन को चेंज कर लेते हैं। फिर एक नया लाइन लिया, उसका एरर निकाला। फिर एक एरर आ रहा है, कम या ज्यादा, आपने ने फिर लाइन चेंज किया, फिर एरर कैलकुलेट किया। ऐसे चेंज करते करते आप लोगों के पास बहुत 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 सारे एरर्स आ गए। फ्रॉम दोज एरर्स you choose the minimum error and you say this is the best fit line, right? But students, do you think this is feasible? No, sir. No, sir. भाई infinite number of lines को चॉइस करने में तो infinite time चला जाएगा, isn't it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So what is the way to do? The way Sir, to do, maximum. yes, the way is given by mathematics. So it is the calculus which will rescue us from this infinite loop. Calculus हम लोगों को बचा लेगा। Maxima and minima is the method by which you will find out the line of best fit. Is it okay? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So let us see the calculus. I'm not going to derive it. Don't worry, मैं डिराइव नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को रिजल्ट दे दूंगा। लेकिन मैं आपको कैलकुलस भी बता दूं क्या है। सो डेल्टा क्या है प्लीज स्टूडेंट्स? डेल्टा इज YM1 माइनस MX और Y summation of YMI MXI माइनस C इस चीज का होल स्क्वायर। एम आई राइट स्टूडेंट्स? I का समेशन प्लीज। Yes, मैं sir. स्लो जा रहा हूं, यस सर। Yes, sir. ध्यान दीजिए। ये है YMI और ये वाला पोर्शन है YLI। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आप लोगों को वो लाइन निकालना है। यू हैव टू फाइंड दैट लाइन। वी हैव टू फाइंड अ लाइन फॉर विच डेल्टा इज मिनिमम। एम आई राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बोलिए डेल्टा किसका फंक्शन है? क्या चेंज कर रहे थे आप? मैनुअली क्या चेंज कर रहे थे स्टूडेंट्स? क्या चेंज करने से डेल्टा चेंज हो रहा था? Slope. तो डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ M and C. Am I right? Yes. Yes, sir. Yes. Sir. So डेल्टा अगर M और C का फंक्शन है तो डेल्टा मिनिमम कब होगा?
when del delta of del m इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और दूसरा कंडीशन है del delta of del c इक्वल टू 0 पुट करेंगे. Am I right, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई अगर कर देंगे या इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, we will find out that m and that c. वो m और वो c निकल जाएगा जिसमें डेल्टा क्या निकलेगा? Zero. Minimum. Is it okay? Minimum. Is it okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहा डेल्टा फंक्शन, ये रहा डेल्टा का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू m and c. हम लोग इसको डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं. Can we differentiate it? Yes, Yes. sir. Yes, sir. I am not going into the differentiation. मैंने अभी अभी बोला मैं यहाँ पे डेरिवेशन करने नहीं आया हूँ. आप लोग खुद डिराइव कर सकते हो. अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा डेरिवेशन में, so you can always approach me कि सर थोड़ा दिखा दीजिए ये डेरिवेशन कैसे आया. But for the time being, I am not doing the derivation. मैं सिर्फ रिजल्ट आप लोगों को देने वाला हूँ कि कौन सा m और कौन सा c लाइन ऑफ बेस्ट फिट देगा. Is it clear, everybody, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Right. So let me give you the m. The m is given as summation of xi yi by n minus x bar y bar. Don't worry, I'll explain. Divided by summation of xi square by n minus of summation of x bar square. Please note down the formula, students. ये फॉर्मूला नोट कर लो. ये डेरिवेशन करने के बाद आया है. और c क्या होगा? c would be m x bar or let me write it. This would be y bar minus, I'm sorry. This would be y bar minus m x bar. ये दो फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला नोट कर लो. This is the slope and intercept for the line of best fit. M and C are the slope and intercept for the line of best fit. और स्टूडेंट्स ये कहां से आया ये फॉर्मूला? ये दोनों डेरिवेटिव्स करने के बाद, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल अलजेब्रा करने के बाद हम लोगों को ये फॉर्मूला मिल जाएगा. आप लोग खुद कर सकते हो. यू कैन डू इट योरसेल्फ. ये रहा डेल्टा, ये रहा डेल्टा. दिस इज योर डेल्टा. यहां मैं m को हटा देता हूं, yi कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो. काफी हौच पौच बन रहा है. ym को हटा देता हूं. So this is what you have. yi. This is delta. What we are meaning by x bar? Coming. I'll explain everything. अब आपका सवाल है कि ये x bar, y bar ये सब क्या है? n ये सब क्या है? So have you noted down the formula, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now let me tell you कि आप लोग ये निकालेंगे कैसे. ये निकालेंगे कैसे? Let me rub this part only. Now let us say you have a data set. आपके पास डेटा, आपने एक्सपेरिमेंट किया है x y, आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया और आपके पास एक डेटा है x1 y1
x2 y2, ये आपका डेटा पॉइंट्स है, x3 y3 एंड सो ऑन, ये आपके पास डेटा है। आप लोग सबसे पहले x का एवरेज निकाल लीजिए, दैट इज x बार, एवरेज ऑफ x, एवरेज ऑफ x। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. y का एवरेज इज y बार, ये भी निकाल सकते हैं आप लोग, आपके पास सारे y's हैं, आपके एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम बनाइए, नेक्स्ट कॉलम बनाइए x स्क्वायर का, x स्क्वायर का, x स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर करिए, यानी यहां पे आपका आएगा x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, स्क्वायर कर लीजिए, देन x3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इन सब का एवरेज करिए। सो व्हाट इज दिस पार्ट? कैन एनीबॉडी टेल मी? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, Summation of all the x squares. and divided by n. What is n? N is the Number number of observations. Is it okay? Yes, sir. Yes. What is this? This is basically इन सब का अगर मैं जोड़ दूं, X square bar. summation of xi square, जबकि मैं i पे समेशन कर रहा हूं, तो इन सबको जोड़ दिया और अगर मैंने इन सब का डिवाइडेड बाय द नंबर कर दिया तो ये एवरेज आ जाएगा, यानी इन सब का एवरेज। एम आई राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट एक कॉलम बनाएंगे आप लोग, वो है एक्स वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी x1 y1, x2 y2, ऐसे करते करते ये सारे। इज इट ओके एवरीबॉडी? यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे यहाँ पे कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यू राइट डाउन हियर एंड सो ऑन। इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. By the formula, we are getting the slope of the line which we are drawing. हाँ, so this is the coming, so this is the part, यानी ये वाला जो पार्ट है वो है summation of xy, यानी ये जो मेरा लास्ट कॉलम बनाया हुआ है मैंने, इसका summation डिवाइडेड बाय n, so you would get this। अगर ये सारे वैल्यूज आपने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, if you put all of these values in this formula for m, you would get the slope of the best fit line। Is it okay everybody? Okay, sir. Okay, sir. और ये फॉर्मूला कैसे आया, मैंने अभी अभी बताया आपको, ये फॉर्मूला कैसे आया, डेल डेल Del बाय डेल एम Equal to 0. इक्वल टू 0, डेल डेल बाय डेल सी इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपको पहले इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू m, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू c and put it equal to 0 and then solve these two equations, you will get these two m and c। Is it okay everybody? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Please repeat. m, ये m का फॉर्मूला, ये जो m का फॉर्मूला है ये किसी भी लाइन के लिए नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो स्लोप का फॉर्मूला है, दिस इज द स्लोप फॉर द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट का स्लोप है, ये वाला जो फॉर्मूला है। इज इट ओके? और ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं आपके डेटा टेबल से ही, मैंने जैसे दिखाया आपको। अब ये फॉर्मूला, आई रिपीट, ये कहां से आया? ये फॉर्मूला आया डेल को मिनिमाइज करके, यानी एरर को मिनिमाइज करके। मिनिमाइज करेंगे यानी उसका मैथमेटिकली कैसे करना है, ये किसका फंक्शन है? डेल इज अ फंक्शन ऑफ m And C. and c, so you differentiate del with respect to m and put it equal to 0, you differentiate del with respect to c and put it equal to 0, और ये दो इक्वेशंस आएंगे आपके पास, ये दो इक्वेशंस है, these are basically इक्वेशंस आ रहे हैं। अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये m और ये c आ जाएगा। Is it okay everybody? Yes, sir. Yes, sir. I repeat again, अगर आप लोग घर में इसको ट्राई करेंगे, ये इक्वेशन ले आने को, ये आप ट्राई करेंगे, you will try this at home। अगर आ जाता है वेरी गुड, अगर नहीं आता है then please you can consult me anytime, कभी भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और मैं आपको ये डेरिवेशन दिखा सकता हूं। बट टुडे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट
मैं ये दिखा नहीं रहा हूं, बट इट्स अ सिंपल डेरिवेशन, सिंपल, एकदम सिंपल डेरिवेशन, सीधा ये दो इक्वेशंस आ जाएंगे। एवरीबॉडी, इज इट ओके? Sir, Yes, sir. बोलो। summation of I can't hear you, it's very low, your voice is very low. So I'm asking वो इन के इक्वेशन में वो जो हाँ। नीचे में है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, उसके नीचे क्या एल है? हाँ 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 हाँ, दिस, दोनों के नीचे? नहीं नहीं, एक सेकंड, I'll write the formula. Are you able to see the screen? Yes. Okay, I'll write down the formula again for you, please. M is equal to summation of I x I y I by n, सिर्फ इसके नीचे n है, माइनस x बार y बार, इसके नीचे कोई n नहीं है, डिवाइडेड बाई, इस पूरे का डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ x I स्क्वायर, इसके नीचे n है, माइनस x बार स्क्वायर, इसके नीचे कोई n नहीं है। इज इट ओके नाउ? Sir. And C is y bar minus mx bar. Is it okay? Yes, sir. Yes. यानी एक बार आपको m मिल गया, आई एम सॉरी, एक बार आपको m मिल गया तो ये m का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में y बार आपको पता है इट इज द एवरेज ऑफ y, x बार आपको पता है इट इज द एवरेज ऑफ x, तो आपको इंटरसेप्ट ऑफ द बेस्ट फिट लाइन भी मिल जाएगा। इज इट ओके? यस सर। Okay, sir. Yes, sir. तो अगर आपका पास, प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, ये रहा डेटा पॉइंट, ये रहा डेटा पॉइंट, ये आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, राइट? और आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे? यू विल फाइंड आउट m बाय दिस फॉर्मूला, यू विल फाइंड आउट c बाय दिस फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपको m पता है, यानी बेसिकली यू नो tan थीटा, एम आई राइट? Yes, sir. Yes. sir. सो आपको एंगल पता है, कौन से स्लोप में आप लाइन को ड्रॉ करेंगे, और अगर आपके पास c पता है, यानी y इंटरसेप्ट क्या है, सो अगर आपका y इंटरसेप्ट ये है, मान लीजिए दिस इज योर c, ये c निकला आपका, तो ये आपका y इंटरसेप्ट है, और आपको एंगल tan थीटा यानी थीटा पता होगा, अगर आपको m पता है तो m इज बेसिकली इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इज बेसिकली इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m, सो यू नो दिस। तो अगर आपको थीटा पता है और अगर आपको इंटरसेप्ट पता है, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया लाइन ऑफ बेस्ट फिट, मान लीजिए। इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. You know the slope, if you know the intercept of the line of best fit, you can draw the line of the best fit. So आपका बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ हो गया, और इस लाइन में कोई गड़बड़ नहीं है, ये आई एस्टिमेशन से नहीं हुआ है, ये मैथमेटिक्स यूज करके हुआ है। इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now to conclude this session, let me tell you, मैंने आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालने का, ये तो कैलकुलस से निकल गया, दिस इज बेसिकली यू आर यूजिंग दिस, एक स्टेप से निकाल लिया आप लोगों ने। एक प्रोसेस मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि आप एक लाइन लेंगे, इस लाइन का एरर निकालेंगे, फिर दूसरा लाइन लेंगे, दूसरे लाइन का एरर निकालेंगे, चेक करेंगे छोटा है या बड़ा है, फिर तीसरा लाइन लेंगे, उसका चेक करेंगे छोटा है या बड़ा है, और ऐसे करके बहुत सारे लाइंस का जब आपके पास एरर आ जाएगा, यू विल फाइंड आउट दैट लाइन व्हिच हैज द मिनिमम एरर। इज इट ओके? यही था ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसी को हम लोगों ने कैलकुलस से एक स्टेप में सॉल्व कर लिया कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट डू दिस। इज इट ओके? यू जस्ट डू दिस, ये m और c निकाल लो, राइट? बट Yes, sir. प्लीज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ये स्ट्रेट लाइन के लिए निकालना आसान है m और c, बट अगर वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो आपको वो कर्व कैसे पता चलेगा? प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
I'll conclude with this. So let us say ये line नहीं है, so this is your y and this is your x, and your graph looks like this. Or I am sorry for this. So I'll just take five more minutes. So this is one point, this is another 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 point, and this is another point, like this. Is it okay? क्या लग रहा है? Is this a straight line? No, sir. No, sir. So it's a quadratic fit. Am I right? यानी ये कुछ कर्व ना ऐसा आने वाला है. Am I right? कुछ कर्व ऐसा आने वाला है. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. तो यानी आपका जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ax square plus bx plus c. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी आपको क्या निकालना है? आप लोगों को क्या निकालना है? A, B, B और C. Am I right? Yes, sir. Yes. अगर आपने सही ABC निकाल लिया जो आपके डेटा को ठीक से फिट कर रहा हो, तो वो आपका बेस्ट फिट कर्व हो जाएगा. इस केस में बेस्ट फिट कर्व हो जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो, इसके लिए वो डायरेक्ट फॉर्मूला इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस हो सकते हैं जिसके लिए लीनियर लाइन के लिए तो वो फॉर्मूला आराम से निकल गया. बट इफ इट इज quadratic, if it is cubic, if it is biquadratic, then finding out the line of best fit by that formula, one shot जो हम लोग निकाला, would be difficult. उस केस में let us say you choose a curve like this. इस कर्व का अपना क्या है बोलो तो? इस कर्व का अपना क्या है? ये जो मैंने दूसरा कर्व बनाया, इसका क्या है अपना? A, B, C. C. A, B and C. So you just put that curve and you calculate the error. ये आपका एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है. एम आई राइट? एरर कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग सेम तरीके से. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपने कर्व चेंज कर दिया. नाउ यू ड्रॉ अनदर कर्व. लेट मी यूज अ सेपरेट कलर. जैसे मैंने बोला था, यू ड्रॉ अनदर कर्व. सिमिलरली इस कर्व के लिए भी यू वुड फाइंड आउट द एरर. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड यू प्रोग्रेस इन सच अ वे. आप इसी तरह से दूसरा एक और कर्व चॉइस करेंगे. ऐसे करते करते एक ऐसा कर्व मिलेगा जिस कर्व में आपका जो डेल्टा होगा वो मिनिमम मिल जाएगा. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Isn't this learning? आप सीख रहे हैं ना? Don't you think this is learning? The machine is learning. Don't you think the machine is learning? क्या बोल रहे हैं आप मशीन को? प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आप मशीन को क्या बोल रहे हैं? आप मशीन को बोल रहे हैं कि आप मशीन कैलकुलेट डेल्टा. डेल्टा कैलकुलेट करो. आपके पास एक फॉर्मूला है डेल्टा कैलकुलेट करने का. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? डेल्टा इज बेसिकली समेशन ऑफ YMI minus YLI whole square. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मशीन ने डेल्टा कैलकुलेट कर लिया. अब आपने बोला इफ डेल्टा इज हाई, इसको चेंज करो, A, B और C को चेंज करो, दोबारा डेल्टा कैलकुलेट करो. एम आई राइट? Yes, sir. तो मशीन दोबारा डेल्टा कैलकुलेट कर रहा है. फिर से डेल्टा हाई आया तो मशीन को बोल रहा थोड़ा और लो आए, थोड़ा और लो. करते करते यू टेल द मशीन दैट टेक दैट वैल्यू ऑफ A, B and C for which you get the lowest delta. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Isn't this machine learning? Yes, sir. Isn't this artificial intelligence, students? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Please understand, ये जो आप रिग्रेशन आज किया हम लोगों ने, ये आपके मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हर फील्ड में, जैसे मैंने शुरू में बोला है,
ये हर फील्ड में आज के डेट में एप्लीकेबल है। आज हमने शुरू किया है, रिग्रेशन इज जस्ट द स्टार्ट। ये जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला है ना, लाइन ऑफ द बेस्ट फिट का mx प्लस c, ये बेसिकली मशीन ने सीख के निकाला है। m और c को मशीन सीख के निकालेगा। किससे सीख रहा है मशीन? प्लीज अंडरस्टैंड, मशीन किससे सीख रहा है? मशीन इज लर्निंग फ्रॉम द एरर्स। एम आई राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. If the error is high, it is changing m and c. For lowest error, it is taking that m and c. It is stopping. Machine stop कर रहा है. That is your line. For that a, b and c, for which delta is minimum, the machine is stopping. अगर error ज्यादा है उससे, it will start taking different curves. Am I right? Yes, Yes, sir. So Yes, this is sir. basically regression is just the start of this analysis. ये machine learning, artificial intelligence, data science, data analytics, everything उसका ये शुरुआत किया है आज आप लोगों ने regression समझ के। regression से तो one shot से, मैंने जो फॉर्मूला दिया आपको m और c निकालने का, वो तो एक शॉट से निकल गया। बट एक मशीन जहां पे एक शॉट से निकल नहीं सकता, वो कैसे पता करेगा कि कौन सा कर्व बेस्ट है? वो पता करेगा अलग अलग कर्व लेके, अलग अलग ए बी सी को लेके ट्राई करेगा, फेल करेगा और सुधारेगा। इट विल ट्राई, फेल एंड इंप्रूव, जैसे हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। इजंट रियल इंटेलिजेंस दिस ओनली? एक बच्चा सीखता कैसे है? इट डज समथिंग रैंडमली, उसको डांट पड़ती है या उसको प्रेज पड़ता है? अगर डांट पड़ती है तो वो समझ जाता है उसने गलत किया है, ही और शी ट्राइज टू इंप्रूव इट। सो वो एरर है, वो समझ गया। ज्यादा डांट पड़ी तो मतलब ज्यादा एरर है, कम डांट पड़ी तो मतलब कम एरर है, थोड़ा सुधारने से ही हो जाएगा। Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we all learn the same way. हम लोग भी इसी तरह से सीखते हैं। We learn by hit and trial from our childhood. हम लोगों को गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स हम लोगों को सिखाते हैं कि ये तू कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये करके देख शायद सही हो। यू डू हिट एंड ट्रायल, अच्छा ठीक है, ये करके देख लेते हैं। देन अगेन यू गेट एन एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस क्या है? दैट इज द एरर। आप कैलकुलेट करते हो कि आपका एरर कितना ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा है तो चेंज कर लेते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर ने देख लिया, मशीन ने देख लिया कि एरर बहुत ज्यादा है, इट चेंजेस ए बी एंड सी। फिर से एरर कैलकुलेट किया, देखा अभी भी ज्यादा है, थोड़ा और चेंज करके देख लेते हैं, ए बी और सी अभी भी ज्यादा है, थोड़ा और चेंज करते हैं। करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उससे कम नहीं हो सकता। सो दैट विल बी द मिनिमम ऑफ डेल्टा। सो द कंप्यूटर has learned what is the curve। जो तुम्हारे डेटा को, एक्सपेरिमेंटल डेटा को, रियल लाइफ डेटा को सबसे बेस्ट फिट कर रहा है। Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. sir. और अगर आप अब उस डेटा को, अगर आप अब उस कर्व को अननोन डेटा दे देंगे तो वो प्रिडिक्ट भी कर देगा। द कंप्यूटर विल बी एबल टू प्रिडिक्ट। अब आप बोलेंगे अच्छा एक पर्टिकुलर एक्स के लिए बोलो तो कितना मेरा y आएगा, तो इस इक्वेशन पे वो डाल देगा, वो a, वो b और वो c जो उसने निकाला हुआ है बेस्ट, उस पे ये डालेगा and it will say for this x your y should be this। so that is your prediction according to your model, mathematical model। so the computer has learned, the computer is making predictions for you। कंप्यूटर आपको प्रिडिक्शन करके दे रहा है। हेल्थ इंडस्ट्री में कुछ भी, मतलब स्मोकिंग, कितना स्मोक करते हैं तो हार्ट डिजीज कितने एज में आ सकता है, इतना साइकिलिंग करते हैं दिन भर, इतना एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट डिजीज कितने इसमें आ सकता है, डायबिटीज कितने एज में हो सकता है। अगर आपके पास डेटा है, फीड इट इनटू द कंप्यूटर विल लर्न फ्रॉम दैट डेटा और आपको एक अननोन डेटा के बारे में प्रिडिक्ट करके दे देगा कि आपको हार्ट डिजीज इस एज में हो सकता है। कैंसर सेल्स, कैंसर थेरेपी, एवरीथिंग एवरीवेयर, एरोडायनामिक्स में, प्लेन्स के डायनामिक्स में, गाड़ी में, आज के डेट में एवरीवेयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और जो मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, ये सारे इनके पास डोमेन नॉलेज भी होगा, ऑटोमोबाइल का, मैकेनिकल पार्ट्स का, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का। साथ में अगर ये एनालिटिक्स वाला पार्ट आप लोगों ने कर लिया
So you are the champions of the industry. You would become the champions of the industry. So this is just the start, students. ये मैंने सिर्फ start किया है आप लोगों के साथ. This was all about regression. Are there any questions? Yes, Shashmit Viswas. Yes, Shashmit. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Shashmit. Yes, Shashmit raised your hand. Any questions?